Hello everyone, good morning all of you. Welcome back to my YouTube channel Swadip Academy. In today's video, we are going to analyze the previous year questions from the last 7 years based on the chapter power sharing. And through this analysis, we will try to identify the important trends in this question papers, and based on this trend आमे कैटेगोराइज करिबा चैप्टर को इनटू हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस स्ट्रक्चर अप्रोच will help you focus on the most important topics and prepare effectively for the board exam. Also at the end I'll give you the bonus tip for the high achievers, average students, also to the slow learners. So stay tuned. So now let's look at the question that have been asked from this chapter. First question, that is, compare the situation of Belgium and Sri Lanka considering their location, size and cultural aspects. It means in this question you have to explain the ethnic composition of Belgium, ethnic composition of Sri Lanka, and with that whatever we discuss regarding their location, their size and their population size, you have to explain everything. Okay, it's a 5-mark question. Okay. Okay students, आमे detail answer discuss करिबानी, just we will discuss the trend of the question. Okay, आमे question रो trend को देखिबा, question paper रो pattern देखिबा. Okay, and आमे देखिबा को level रो question आसुची, so that we can आमे categorize करि परिबा different category रे, and ता सहित from 2026 perspective को टॉपिक गुडी को बहुत इंपोर्टेंट, बा आमे को टाइप रो क्वेश्चन, आमे केते डेप्थ को जिबा दरकार, को लेवल रो क्वेश्चन प्रिपेयर करिबा दरकार, आमे ता बुझि परिबा. ओके, सो ए वीडियो रे मु आंसर डिस्कस करिबि ने, जस्ट ओवरऑल ही मु जस्ट कहिबि जे हां ए पार्ट रे एभली आमे आंसर लिखिबा दरकार. जेतो हमर रिवीजन सेशन आसीबो, ड्यूरिंग दैट पीरियड वी विल गो थ्रू द ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इन डिटेल. ओके, नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. Which one of the following is a major caste group of Sri Lanka? Okay, it's a very important question. Very important question, both tricky question. Which one of the following is a major caste group? Okay, lekha jayi kon Christian and Tamil, Buddhist and Hindu, Sinhali and Tamil, Sinhali and Christian. As you can see here, Christian, it is a religious group. Here Buddhist is also a religious group and Christian is a religious group. It means right answer will be na Sinhali and Tamil. देखो केते tricky question. Okay, question रे किछि भी difficult नहीं. 2020 रे आस्थिला question रे, as you can see here. Just look at कि question केते tricky आसे. Totally difficult नहीं question. Dead easy, but confusion create हबो. Okay. Next. Which one of the following is a majority group in Sri Lanka? Direct answer, very easy. Okay, tell me in the comment section. 59% of the total population of Belgium lives in the Dutch region. You that is Wallonian region. Direct question again. Then next question is, two statements are given below. Association region based. Sri Lanka adopted Tamil as the official language of the state, not Tamil. Okay, that is, you know that Sinhala, according to 1956 Act, according to that Act, Sinhalese, they recognize Sinhala as the only official language. Okay, and government of Sri Lanka adopted series of majoritarian measure. Yes, reason रे ठीक अछि. It means A is false but R is true. Okay, this is the right answer. Next, what percentage of the population of Belgium lives in the Flemish region? Okay, again I am telling you, tell me in the comment section. Direct question. Okay, next, ଗୋଟେ case based question भी आस्थिला from the ethnic composition of Belgium. Okay, ethnic composition of Belgium part 2 2023 रे set 4 रे. Okay, 4 mark. This is the 4 mark. 4 mark रा आस्थिला ethnic composition. Then which of the following group is in majority in Sri Lanka? Okay, last year question आसी set 3 रे 1 mark MCQ रे आसी. Which one of the following group is in majority in Sri Lanka? Tamil, Sinhala, Telugu and English. That is completely direct. Sinhala is the right answer. Okay, देखो एक question टे केते easy अछि, but this question, okay, ये question टे बहुत ही tricky थिला 2020 रो question. Next, the French speaking community was
rich in comparison to Dutch speaking community in Belgium. Dutch speaking community got the benefit of economic development and education much later. Okay, this is correct. Dutch speaking community economic benefit and development बहुत परे पाई छंदे जोथि पाई तो बेल्जियम रे प्रॉब्लम क्रिएट हेतला. The French speaking community was rich in comparison to the Dutch speaking community. Yes, both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो जदि आमे देखिबा एथनिक कंपोजिशन पार्ट रो लास्ट 7 ईयर रे जदि आमे देखिबा केबे भी लॉन्ग क्वेश्चन आसीनी थरे ही आसला दैट इज इन 2019. ओके 2019 परठू एथनिक कंपोजिशन पार्ट ना 3 मार्क 1 मार्क 1 मार्क ओके देन 1 मार्क 1 मार्क केबे भी आसीनी लॉन्ग क्वेश्चन. यस गोटे 4 मार्क रो केस बेस आसी. ओके नेक्स्ट मेजोरिटेरियन मेजर इन श्रीलंका. हाउ डिड द फीलिंग ऑफ alienation develop among the Sri Lankan Tamils? Why did the feeling of alienation? That is, you know that because of the majoritarian measures adopted by the Sinhala community, or we can say the government of the Sri Lanka, one after another. That was the reason because of which gradually it create the or it increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. It means it is a 3 mark question आसी. इटे तुमको एक्सप्लेन करिवार अछि. दैट इज द मेजोरिटेरियन मेजर. इनडायरेक्टली क्वेश्चन आछि दैट इज मेजोरिटेरियन मेजर इन श्रीलंका. Explain the main reason for the alienation of Tamil in Sri Lanka. Let's see. देखो first question and second question both are same. But थोड़े आछि 3 mark and थोड़े आछि 1 mark. Okay. ये होची CBSE रो खासियत. सी 5 मार्क क्वेश्चन को भी 1 मार्क रे पचारि पारे एंड 1 मार्क क्वेश्चन को भी सी 5 मार्क रे रखि पारे. ओके 5 मार्क क्वेश्चन को 1 मार्क रे पचारि सी चेक करे तमरो केते प्रिसाइजली आंसर लिखि परछो. 1 मार्क क्वेश्चन को 5 मार्क रे पचारि सी चेक करे जे तमरो एलाबोरेशन कैपेसिटी को देखे चेक करे जे तमे केते बेटर एलाबोरेट करि पारछो. ओके ये होची तार बेस्ट एग्जांपल. सेम क्वेश्चन देखो 2019 रे आसला नेक्स्ट ईयर. ओके जस्ट नेक्स्ट ईयर आसी 2020 रो सेम क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर द alienation of Tamil in Sri Lanka, but here 3 mark, here 1 mark. Both the questions are same, just answer different hobo. There was a civil war in Sri Lanka. You know that the act was passed in 1956. Yes, मुझे को details पढ़ूनी. Civil war हवा पछर reason थिला 1956 majoritarian measure. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. The law enacted in 1956 and other constitutional provision led to major conflict between the two communities in Sri Lanka. Yes, support the statement. Support the statement means you have to explain your what. Now that is majoritarian measures in Sri Lanka. 1956 रे जो act pass कराइतला जो act हिसाब रे गवर्नमेंट किछटा मेजोरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट करतला. जेमति सिंहला as the only official language. Okay, and government followed the preferential policies. New constitution adopted ki Buddhism as the state religion. ए सब reason थिला and that led to major conflict between the two communities in Sri Lanka. It means the majoritarian measure of Sri Lanka part rule पास्ट को जदि आमे देखिबा जेते थरा भी लॉन्ग क्वेश्चन आसे. ओके इट्स ए 5 मार्क क्वेश्चन, दिस इज ए 5 मार्क क्वेश्चन, दिस इज ए 1 मार्क एंड दिस इज 3 मार्क. एंड प्रत्येक क्वेश्चन रे से गोटे कांसेप्ट को ही टच करा जायछि दैट इज मेजोरिटेरियन मेजर्स व्हिच वर अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट इन 1956. बट यू नो दैट से पार्ट आमर बहुत भी अदर माइनर कॉन्सेप्ट्स भी अच्छी. ओके श्रीलंकन तमिल्स माने केमती पार्टी स्ट्रगल लॉन्च करथिले. ओके दैट लेड टू दैट इज वी कैन से डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड दैट टर्न टू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट अगेन सुन टर्न इनटू ए सिविल वार. आहरी बहुत गुडे माइनर क्वेश्चंस अच्छी जो पार्ट की 3 मार्क क्वेश्चन ही परिबो. बट लास्ट 7 इयर्स रे हमें देखिचे देखुचे केबे भी से पार्ट रू क्वेश्चन आसु नाही. ओके केबे भी क्वेश्चन आसनी. सबले क्वेश्चन जहाँ भी आसी लॉन्ग क्वेश्चन बा जदि आमे शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को भी जदि आमे एठे देखिबा ऑब्जेक्टिव भी को पार्ट को आसी दैट इज फ्रॉम मेजोरिटेरियन सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स व्हिच वर अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट इन 1956. ओके नेक्स्ट accommodation of Belgium. A part to देखिबा. Okay, what type of questions have been asked in the last years? So let's see. How is community government elected in Belgium? 1 mark. Okay. How is community government elected in Belgium? You know that accommodation of Belgium part 2 asti. You know that is this government is elected by the people belonging to different language community like Dutch, French and German speaking. 1 mark question. Then state any one step taken in Belgium to
to rule out the problem of regional differences and cultural diversities. बेल्जियम रे जो आमे regional differences and cultural diversities को नहीं जो issues थिला ताकू रूल आउट करबा पय बेल्जियन गवर्नमेंट बहुत गुडा स्टेप्स नैथिला जहा कि हमें अकोमोडेशन इन बेल्जियम पार्ट हमें डिस्कस करछे से भितर कोनोसी गोटे को मेंशन करो ओके अगेन इट्स ए 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन देखो बोथ क्वेश्चन आसी को पार्ट तमे जदी अकोमोडेशन इन बेल्जियम लॉन्ग क्वेश्चन टी प्रिपेयर करि दोछो देन फर्स्ट क्वेश्चन भी हिजिवो सेकंड क्वेश्चन भी हिजिवो नेक्स्ट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम ओके कम्युनिटी ऑफ बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम रे कहा भितर पावर शेयर कराइछि among different social group among different organ among different center and state government and community government that is you know that is among different social group different language group भितर पावर शेयर कराइछि through the community government again question number 3 accommodation of Belgium part 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन रू आसी जो 3-4 पॉइंट पढ़ते से पार्ट में आसी द नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ओके 3 मार्क क्वेश्चन देन हाउ डिड बेल्जियन गवर्नमेंट अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटीज एक्सप्लेन विथ एग्जांपल 3 मार्क अगेन बोथ आर 3 मार्क एंड डायरेक्ट क्वेश्चन अकोमोडेशन इन बेल्जियम इट मीन्स अगेन ए पार्ट रो जदि हम अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम 5 मार्क क्वेश्चन आम प्रिपेयर कर दूचे अवश्य लास्ट इयर्स मानकर आम देखुचे केबे भी 5 मार्क आसीनी ओके 3 मार्क ही आसीची किंबा शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क स्टिल जदि आम 5 मार्क प्रिपेयर कर दूचे देन अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम पार्ट रो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आम टच करि पारिबा ओके आउरी क्वेश्चंस अछि एज यू कैन सी बेल्जियम अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम amendments were to enable everyone to live together in the same country okay yes both the statements are correct and are is the correct explanation of a identify the primary objective of power sharing arrangement in Belgium रे power sharing arrangement रो main objective कौन थिला ना to establish unitary government no centralized political control no establishing cultural and educational matters of touch no accommodating linguistic and regional interest yes okay book रे direct लिखा है they recognize the existence of regional differences and cultural diversities and also between 1970 to 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country okay that is linguistic and regional interest different group of people केमती गोटे कंट्री रे बहुत सुंदर भाबे बा गोटे हार्मोनियस लाइफ बंची परिबे ओके ए उद्देश्य सहित बा ऑब्जेक्टिव रो सहित पावर शेयर अरेंजमेंट बेल्जियम रे प्रिपेयर करा जाइथिला जहा कि हम ऑलरेडी डिस्कस करिछे ओके बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म बाय स्ट्रेंथनिंग which one of the following types of comment okay belgium तार मेजोरिटेरियनिज्म इशू बा बेल्जियम रो जो रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इश्यूज को से रिजॉल्व करिथिला केमते बाय अडॉप्टिंग यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बाय अडॉप्टिंग presidential government by adopting federal structure and by adopting parliamentary form of government answer is by adopting federal structure by sharing power among the central government state government and with the community government you know that next which of the following countries is an example of sharing power between the national and state government that is Belgium the Belgian leader took a different path in the Sri Lanka different path than Sri Lanka they recognize the existence of regional differences and yes okay you have to answer me this question in comment section okay बहुत important question last year आछे okay question रे बहुत ही मन पाइला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट ओके क्वेश्चन तो रिपीट हबनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बट स्टिल कांसेप्ट डेवलप करबो बेल्जियन लीडर टुक ए डिफरेंट पाथ देन श्रीलंका अपेक्षा गोटे डिफरेंट पाथ को अडॉप्ट करतले बेल्जियन लीडर दे रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड व्हाट ए भितर कोटा बेल्जियम टुक सम मेजर्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम रीड द फॉलोइंग मेजर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन लास्ट ईयर ही आछि formation of the community government following the majoritarian policy no by adopting equal representation of language group yes by providing additional powers to the local government okay ए टाइप रो जो हमें क्वेश्चन देखु छ ना ए टाइप रो क्वेश्चन 2023 परठु ही आसी आ पूर्व तमे सेट्स देखो क्वेश्चन देखो ए टाइप रो क्वेश्चन आसीनी ओके ए टाइप रो जो क्वेश्चन ओके सेति पे हम क्लास रे कोइ जे तमे क्लास रे अटेंटिवली कांसेप्ट को बुझु छ ओके रट्टा मारिबा किछि भी आवश्यक नहीं जदि कांसेप्ट क्लास रे केवल बुझिछ आंसर ही जीवो ओके तो बेल्जियन लीडर
तांको प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पे को मेथड को अडॉप्ट करथिले ना कम्युनिटी गवर्नमेंट इश्यू हितला यू नो दैट ओके इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप आकु भी अडॉप्ट कराइतला बोथ सेंटर रे एंड कैपिटल सिटी रे बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर टू द लोकल गवर्नमेंट यस थ्रू द कम्युनिटी गवर्नमेंट बट से माने मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को अडॉप्ट करी नथिले इट मींस 2 जोठी थिबा आंसर हबनी ये भी हबनी 2 ये भी हबनी एठी भी 2 अछि हबनी इट मींस राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओके तो ये देखि पड़थो को टाइप रो क्वेश्चन ही पड़चे अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम 19 रु जदि हमें देखिबा अप टू 2025 देन अकोमोडेशन डायरेक्ट क्वेश्चन ही पड़चे 3 मार्क 5 मार्क के भी आसनी अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चंस ओके नेक्स्ट व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल व्हाई इज पावर शेयरिंग वेल फॉर डेमोक्रेसी इज 1 मार्क ओके व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एक्सप्लेन वन रीजन अगेन 1 मार्क ओके ये जो लिखा है 2019 सेट 5 1 ये जो 1 होची मार्क ओके रिमेंबर मैं जो 1 लिखछि ये होची से केते मार्क कैरी करछि से क्वेश्चन ओके देन थर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग again I am telling you this type of question 2022-23 परठु ही आछि okay so let's see consider the following statement on power sharing it depend democracy yes it helps to reduce the conflict yes it is way to ensure political stability yes it brings socio-economic struggle no okay socio-economic struggle को enhance करेनी instead of that what ना it ensure stability of the politics harmonious life provide करे तो आंसर हो कौन that is 1 2 3 that is the right answer next consider the following statement on power sharing and choose the correct option majoritarianism is the real spirit of democracy no never it creates balance and harmony in the different group yes it reduces the possibility of conflict yes power sharing is the essence of democracy yes right answer is 2 3 4 this is the right answer consider the following statement of power sharing and choose the correct option okay give me the right answer in comment section okay question ro mata answer comment section re dio the next देखो why is power sharing desirable 2 mark power sharing increase the trust between different group support the statement okay first time पे जदि हमें 2019 देखिबा as you can see okay why power sharing is essential it 1 mark आछि why power sharing is desirable again 1 mark remaining जहाँ भी आछि remaining years मान करे 1 mark ही आछि last year 2005 रे first time पे 5 mark question आछि but देखो question को बहुत modify करा जाइछि power sharing increases trust between different groups okay you have to support this statement power sharing द्वारा केमिति डिफरेंट ग्रुप्स मानक भितर आमे कोन करि परिबा ना ट्रस्ट क्रिएट करि परिबा ओके एक क्वेश्चन को एनालाइज करिया पे हेले बा एक क्वेश्चन को सपोर्ट करिया पे हेले हमरो टू टाइप्स रो मेथड अछि एदर तमे प्रुडेंशियल एंड मोरल रीजन टू पावर शेयरिंग आमे डिस्कस करथिले ओके प्रुडेंशियल रीजन टू पावर शेयरिंग रो पॉइंट्स को नै कि बे आमे क्वेश्चन रो आंसर को लिखि परिबा किंबा आमे श्रीलंका एंड बेल्जियम रो इश्यू को नहीं कि मते आंसर टी लिखि परिबा ओके पावर शेयरिंग इंक्रीज द ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स बट श्रीलंका एंड बेल्जियम बोथ रो एग्जांपल नहीं कंक्लूजन ड्रा करी जदि हम आंसर लिखिबा देन आंसर टी कोन हे जो बहुत लेंदी हि जिवो तो आंसर को हमको प्रुडेंशियल कॉस्ट टू पावर शेयरिंग ओके तार पॉइंट को हमको नहीं कि ये आंसर टी प्रिपेयर करिवार अछि ओके सो इनडायरेक्टली क्वेश्चन टी को पार्ट आसे हम कहले चलिबो ना व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रुडेंशियल कॉस्ट टू पावर शेयरिंग स्टेम पे हम देखिली लिटिल बिट टफ क्वेश्चन कहि परिबे पार्ट रो ओके आसे लास्ट ईयर 2025 रे यस 2026 पिलांग पई कहि परिबे बहुत गोटे पॉजिटिव न्यूज़ दे हां ए टाइप रो क्वेश्चन ए पार्ट रो no asipa because last year he asi but other part was let's see last part that is types of power sharing how is the idea of power sharing emerge explain different forms question different types of power sharing and you know that under this ame padthile power sharing arrangement among the different organ of the government power sharing arrangement among the different level of the government among the different social group and among the political parties pressure group and movement group you have to explain everything but first question part is little bit typical okay इथे पचरा जाइछ कोन हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज आइडिया टी केमिति इमर्ज हितला हाउ बट अगेन आको जदि हम एक्सप्लेन करिया पे जिबा हम जदि कांसेप्ट को चल जिबा दैट इज श्रीलंका एंड बेल्जियम आंसर टी बहुत लेंदी हि जिवो सो हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज ए पार्ट रे हमको लिखिबार अछि प्रुडेंशियल रीजन and moral reason to power sharing and because of all this reason we need power sharing ए भली लिखि हमको conclude करिवार अछि and with that हमको four types of power sharing हमको
एनालिसिस करिवे अछि ओके 2019 रास्त्रा क्वेश्चन टी मु कहबी क्वेश्चन टी लिटिल बिट टफ थिला केवल फास्ट पार्ट आराम रे लिखि देबे पिला बट फास्ट पार्ट आंसर लिखबाटा लिटिल बिट चैलेंजिंग ओके यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर द एग्जाम अदरवाइज ए टाइप क्वेश्चन जदि पूर्व थरे थर प्रैक्टिस न करना एग्जाम रे ऑल ऑफ सडन प्लान करी आंसर लिखिबा लिटिल बिट टफ नेक्स्ट evaluate the power sharing system in India again just like the previous one direct question but आसीची कोन ना 3 मार्क मु कहउतली सेम जिंस ओके CBSE 3 मार्क क्वेश्चन 5 रे पचारि पारे 5 मार्क क्वेश्चन 3 रे पचारि पारे सो नेक्स्ट क्वेश्चन identify the correct option of power sharing on the basis of different level of government means union government state government and local bodies देखो स्टूडेंट्स मु पूरा डिटेल्स पढुनी बारंबार कहउची मोर एठे उद्देश्य न क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करिबा मु जस्ट केवल डिस्कस करची जे क्वेश्चन रो पैटर्न कोन ट्रेंड कोन लास्ट इयर्स मानन करे केमिति क्वेश्चन आसी आ केते डेप्थ को जाय कि क्वेश्चन रो लेवल कोन मु से जिंस डिस्कस करची सो दैट हम प्रिपरेशन लेवल को हमें डिसाइड करि परिबा हां हमें एतिकी डेप्थ को जिबा दरकार माय फोकस पॉइंट हियर हमें एठे क्वेश्चन इन डिटेल्स डिस्कस करना ओके यू रीड योरसेल्फ निजे पॉज करी कि वीडियो टी को भल से देखो यदि पारुचो स्क्रीनशॉट भी नहीं जा एंड क्वेश्चन को भल से पढ़ो This question is very important again mu कहबी केबे आसी 2020 रे okay little bit challenging question that is why is there a need to give space to diverse social group in the administration of a democratic country give any one reason okay जदि हम last 7 years रे कहबी types of power sharing part रो maximum question आसी either horizontal power sharing or vertical power sharing or चार्टा को मिसिकी एभली आस्तिबो इवैल्यूएट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया बट जदि क्वेश्चन आसी फ्रॉम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप देन मु कहबी से क्वेश्चन लिटिल बिट टफ काहे कि ना ये डेप्थ को जाइछि ओके बहुत डेप्थ को जाइछि एंड थरे ही एभली क्वेश्चन आसी दैट इज इन 2020 व्हाई इज देयर नीड टू गिव स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हमें पढिथिले डाइवर्स सोशल ग्रुप को हमें काहे कि स्पेस दबा आवश्यक ओके टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग रो थर्ड दैट इज पावर may also be share among different social groups part टी पढो ओके एग्जैक्ट ए लाइन टी तुमे पाइबो रीजन इज डाइवर्स ग्रुप सेमती एलिनेटेड फील न करिवे ओके सेथि पई सेकंड होची दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज ए फेयर शेयर इन पावर that is in both legislature and administration legislature रे आमे एभली ग्रुप को ओके एभली सोशल ग्रुप को आमे स्थान देई परिबा तांको आमे चांस दे परिबा जे सेमाने भी एडमिनिस्ट्रेशन रे पार्टिसिपेट करंतु सेमाने भी लेजिस्लेचर रे निजको पार्टिसिपेट करंतु ए चांस देबा पय एंड सेमान को जेमते एलिनेटेड फेल न होवे ए दीटा उद्देश्य को नै कि आमे स्पेस प्रोवाइड करते डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ओके बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहबी बिकॉज एते डेप्थ को क्वेश्चन केबे जाय नि जदी भी जाय बहुत कम जाए आउट ऑफ 80 ओके हार्डली तमे 3 to 5 मार्क क्वेश्चन ही देखिबो एते डेप्थ को जाइतिबो एंड ए चैप्टर जदी कहबी मु डेप्थ कांसेप्ट दैट इज power sharing arrangement among the different social group, power sharing arrangement among the political parties, pressure group and movement group, then prudential reason to power sharing, moral reasons to power sharing, and with that majoritarian measures in Sri Lanka part जो last part रे हमें discuss करते जे Sri Lanka that means they launch party struggle, okay, and that leads to what ना distrust between the two communities and that led to again the civil war ये जो concept कुड़ी को थिला ये थिला little bit depth concept, okay, जो part to question आसीबार chances very low जदि क्वेश्चन आसुची देन हार्डली 2 to 3 मार्क और 5 मार्क मैक्सिमम ओके पूरा आउट ऑफ 80 क्वेश्चन बिकॉज सब चैप्टर एभली टफ क्वेश्चन अछि प्रत्येक चैप्टर एभली टफ कांसेप्ट आछि कोनोसी भी गोटे चैप्टर ही 2-3 मार्क आसीबो एमति न जे सब जगह चैप्टर केवल टफ क्वेश्चन ही आसीबो नो आउट ऑफ 80 75 मार्क थिबो जोडा कि आराम रे हमें टच करि परिबा हम डिस्कशन रो पार्ट ओके नाउ लेट्स सी डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग देन हाउ इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिकल पावर शेयरिंग इट्स ए 2 मार्क क्वेश्चन horizontal power sharing आसे 3 मार्क vertical power sharing horizontal power sharing both जदि आसी से 5 मार्क आसीबो जदि डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आसी इंडिविजुअली 3 मार्क बट एठी पचरा जाईची 2 मार्क अंडर रे ओके नाउडेज यू नो दैट फ्रॉम 2023-24 to हमर 2 मार्क क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आसी ओके 2 मार्क यू हैव टू एक्सप्लेन विद इन द 30 वर्ड्स वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स थाए that is the under question as how is horizontal power sharing different from vertical power sharing okay it's a actually ये 3 mark किमा 5 mark deserve करे but आसी केता mark ना 2 mark you have to explain it very precisely
Explain the effectiveness of vertical distribution of power sharing, again 2 mark. Okay, horizontal power sharing, vertical power sharing individually केबे भी 5 मार्क होबनी, either सबुडाक मिसिकी एई भली आसीबो कोन 5 मार्क, otherwise individually जदि आसी hardly 2 to 3. And the last one, that is which of the following is an example of horizontal power sharing in Indian democracy? You know that is among division of power among the legislative, executive and judiciary. ये भी last year question आसी जाइए. Okay, so ये थिला हमर different questions जहाँ कि last years मानक last 7 years रे हमर आसी छि. Okay, वर्तमान आमे देखिबा trend of the question, केमिति question को year केमिति question आसी. Okay, 2019 you can see ethnic composition of 5 mark आसी, but remaining year रे केबे भी आसी नाही. ओके, जदि हम मेजोरिटेरियन मेजर्स कहबा 3 मार्क क्वेश्चन 2019 रे आस्थिला एंड आफ्टर दैट केबे भी आसीनी, बट लास्ट ईयर 2025 रे ए पार्ट टू 5 मार्क कोटे आसी जाइछ. ओके, डायरेक्ट 5 मार्क. लास्ट ईयर केबे भी 5 मार्क आसी नथिला. ओके, एज यू कैन सी. एकोमोडेशन बेल्जियम 2020 रे 3 मार्क आसी, 2021 रे भी 3 मार्क आसी, बट 2020 रो टिल टुडे 2025 आउ केबे आसी नाही. ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आसी जाइछ ए पार्ट रो, जेमति देखुथबो लास्ट ईयर 2025 रे, बट 3 मार्क आसी. देखो शॉर्ट क्वेश्चन ए सब जगह जो 1 1 1 1 गोटे सेट नो डिफरेंट सेट रे आसी. ओके, को सेट रे चारोटी सेट 1 1 1 1 चारोटी सेट रे आसी. ओके, इट मींस गोटे सेट रे 1 मार्क ही आसी. वाइस पावर शेयरिंग आसी से लास्ट ईयर केबे भी ए पार्ट टू 5 मार्क आसी नथला, बट 2025 दिस ईयर लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आसी छि पार्ट टू. ओके, वाइस पावर शेयरिंग एसेंशियल. देन टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पार्ट टू 5 मार्क 2019 and 3 marks same question again repeat है 2020 रे, but 21 22 23 24 लास्ट ईयर भी आसी नाही. तो ये जदि ट्रेंड हमें देखिबा एंड जदि मु मार्क को टोटल करिके मु क्रेडिट हिसाब रे नेबी, as you can see सबुठु अधिका क्वेश्चन को पार्ट टू आसे चैप्टर रो, that is from types of power sharing. And second जदि कहबी that is why power sharing and ethnic composition and majoritarian measures and accommodation of Belgium, ये भी किछि कम इम्पोर्टेंट नुह. ओके, ये थिला हमर आजिर ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन पैटर्न भी देखिले, लेवल भी देखिले, ट्रेंड भी देखिले, लास्ट इयर्स मानक रे को भली क्वेश्चन आछि. ओके, एंड प्राय तो क्वेश्चन केबे रिपीट होएनी, एठे थरे रिपीट हेछि, एठी भी हमें रिपीट हेछि क्वेश्चन देखिछे, बट क्वेश्चन रो वैल्यू कोन हेछि ना कमी जाइछि. ओके, मार्क कमी जाइछि. तो ये एनालिसिस रो हमें कोन देखिले, मु एठे कहबी that is for the below average student. जदि मु below average slow learners मानक पई कहबी, those who are facing difficulties with memorizing long questions, okay, and whose target is just to get more than 60 65 plus, से मानक पई मु सजेशन कहबी. लास्ट ईयर जेहेतु वाइस पावर शेयरिंग पार्ट टू क्वेश्चन आसी जाइछि एंड मेजोरिटेरियन मेजर्स पार्ट टू जेहेतु क्वेश्चन आसी जाइछि 5 मार्क, मु रेकमेंड करिबी ए वर्ष तमे टिके अधिका प्रायोरिटी दियो एथनिक कंपोजिशन, बोथ दैट इज ethnic composition of Belgium and ethnic composition in Sri Lanka, and with that accommodation of Belgium long question and types of power sharing. Okay, ये तीनटा long question. Ethnic composition of Belgium, ethnic composition of Sri Lanka, then accommodation of Belgium, and then last that is types of power sharing, at least horizontal power sharing, vertical power sharing. एति फास्ट प्रिपेयर करो. ओके, अगेन मु कहूँ स्लो लर्नर्स को पई. ओके, जो माने सिलेक्टिवली प्रिपेयर हेबे एंड जो मानकर टारगेट जस्ट अबव द 60 प्लस. ओके, एंड ये होची मोर स्लो लर्नर्स मानक पई सिलेक्शन. जदि तमे एति क्वेश्चन वंस कंप्लीट करि सरछ, एति रे तमरो कॉन्फिडेंस हे गला, देन गो फॉर मेजोरिटेरियन मेजर्स एंड देन गो फॉर वाइस पावर शेयरिंग डिजायरेबल. एटा को सेंस रु कहली ना, जेहेतु तुम मानको लॉन्ग क्वेश्चन को मेमोराइज करिवारे डिफिकल्ट होची, दैट्स व्हाई 3 and 5 मार्क केवल सिलेक्टिव कांसेप्ट रु प्रिपेयर करो. ओके, अगेन टेलिंग यू एथनिक कंपोजिशन, accommodation of Belgium, types of power sharing, ए तीनटा सेक्शन रु ही तुम प्रिपेयर करो कोन ना 3 मार्क and 5 मार्क. बट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, but for case based questions and for other 2 mark questions you have to read the chapter thoroughly. काहे कि ना हमें जो हमें क्वेश्चन रो ट्रेंड हमें देखिले. ओके, वर्तमान क्वेश्चन रो ट्रेंड एही भली हमको कोनोसी इन्फॉर्मेशन बेसी मेमोराइज करबा किछ आवश्यक नै. ओके, चैप्टर को जदि तमे थोरोली पढुछ एंड चैप्टर को जदि तमे जस्ट खाली बुझिया पय ट्राई करछ, भल से क्लासरूम रे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करछ, देन आराम रे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करि परिबो. ओके, केवल 3 मार्क एंड 5 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू रो मु सिलेक्शन देली. एंड वंस तुमर ए क्वेश्चन ए तीनोटी कांसेप्ट हे गला, एथनिक कंपोजिशन, accommodation of Belgium and types of power sharing, then go for majoritarian measure and why is power sharing desirable.
एंड जदि मु एवरेज स्टूडेंट मेडियोक्रे स्टूडेंट्स मानक कथा कहबी देन मु कहबी तुम मानक पई सिलेक्शन होची दैट इज ethnic composition of Sri Lanka, ethnic composition of Belgium, majoritarian measure 5 mark, accommodation of Belgium 5 mark, why is power sharing desirable at least 5 to 6 point, and horizontal power sharing, vertical power sharing. एति concept 7टी major question केवल 7टा 3 mark 5 mark prepare करो enough 100% sure दउची that is more than 90% questions तमरे chapter रो हे जिवो ओके more than 90% question हे जिवो and those who are high achievers ओके जो मानकर टारगेट 90 प्लस ओके जो मानकर टारगेट 95 प्लस तमे चाहूचो जे एग्जाम रे मोरा आसु सेमानको पई मु कहबी नो सिलेक्शन ओके नो स्ट्रैटेजी किछि नो थोरोली बुक तुमको पढिया पड़िबो ओके जानिदेल जे क्वेश्चन को लेवल रा आछि बेसी किछि किछि सैंपल पेपर रे देखुथबो जे एभले क्वेश्चंस थाए देखिले ही बाउंस होथबो से क्वेश्चन ओके लागुथबो जे रिलेवेंट हि नो हम चैप्टर ही नाही से भले क्वेश्चंस को स्किप करो ओके एंड आमे डिस्कशन रे देखिले जे जहाँ भी लास्ट 7 इयर्स रे क्वेश्चन जो पार्ट रे भी आसुना काहे कि बुक भीतर भी क्वेश्चंस आसुची एंड हमर अंडरस्टैंडिंग लेवल रे क्वेश्चन आसुची बाउंस हैला भले क्वेश्चन किछि भी आसुनी सब जिंस हमर कांसेप्ट ही आसुची यस रिमेंबर जेमते आमे पार्ट रे देखिले एक क्वेश्चन जहाँ देखिले ओके एक क्वेश्चन हो फास्ट आम दी तीन ऑब्जेक्टिव देखिले ओके बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आसी पारे बट बहुत डेप्थ को जाइए क्वेश्चन आसी पारे दैट्स व्हाई तमानक पे रिकमेंडेशन ए 7टी क्वेश्चन को डिस्कशन करबा सह मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका पार्ट रे जो टिके डेप्थ कांसेप्ट अछि ओके सिविल वार कांसेप्ट अछि श्रीलंकन ता मींस दे लॉन्च पार्टी स्ट्रगल एंड हाउ दे लॉन्च और व्हाई दे लॉन्च ए पार्ट को टिके टच करो ओके पावर शेयरिंग रो बोथ पार्ट को दैट इज प्रुडेंशियल रिलेशन टू पावर शेयरिंग एंड दैट इज मोरल रिलेशन टू पावर शेयरिंग पार्ट को टच करो ओके देन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन को भी जाओ एंड विथ दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डिटेल्स जाओ ओके लाइन बाय लाइन power sharing arrangement among the different social group and power sharing arrangement among the political parties, pressure group and movement group. And what do you mean by movements group? What do you mean by pressure group? What do you mean by political parties? With example, you have to remember everything. Again, I am telling you, if you are expecting score more than 95 plus. So I hope गोटे चैप्टर ऊपर अंडरस्टैंडिंग आसी जाइथिबो जे आमे चैप्टर को को भली प्रिपेयर करबा दरकार ओके सो ऑल द बेस्ट एग्जाम पई भल से प्रिपेयर कर ओके नाउ इट्स ऑल अबाउट दैट इज लास्ट 7 ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आई होप भिडियोटी तुमको भल लागिथिबो एंड हेल्पफुल भी हिथिबो जदि लागुचे भिडियोटी तुमको हेल्पफुल हेइचे देन निहाती फ्रेंड्स को सहित शेयर करंतो कैन लाइक एंड सब्सक्राइब करिया पे जमार भूलंतनी थैंक यू वेरी मच Thank you.